Morning all of you. I Razia Patel from Nanmaji Vidyapeeth Standard 4. So students, in a previous lecture में हम लोगों ने find the perimeter of the given shapes नहीं किया था. We have to completed find the length of the radius for the given diameter. चाहिए एंड ऑल्सो वी हैव कंप्लीट फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन शेप्स. वो भी हमारा क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो चुका है. राइट नाउ टुडे वी विल स्टार्ट मार्क द सेंटर पॉइंट, mark the center of for each of the following circle. Also find the radius of each circle and measure it. ठीक है, वो आज हम करेंगे. आज हमें क्या करना है? Mark the center for each of the following circle. Also find the radius of each circle and measure it. वो आज हम हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन की जो पेपर पैटर्न है मैथ्स की, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमें आज कंप्लीट करना है. ठीक है, सो दैट क्वेश्चंस वी हैव टू कंप्लीट इट टुडे. Okay, so let's start that, and this question you have to write in your notebook, either than rough book or revision book, whatever book आपने रिवीजन लिखने के लिए आपने जो रफ बुक बनाए उसमें आप लोगों को ये लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है. सो लेट्स स्टार्ट दैट. नाउ हियर वी हैव टू राइट रिवीजन. मैथ्स Standard 4th. Now mark the center for each of the following circle. Also find the radius of each circle and measure it. So in that, first of all we have to draw one circle. ओके, मैंने यहाँ पे पेन यूज किए. यू हाउ टू यूज पेंसिल. आप लोगों को पेंसिल से ही ड्रॉ करना है. नाउ सी हियर वन सर्कल इज रेडी. सो इन दैट आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द सेंटर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. नाउ दिस वन इज अ सेंटर पॉइंट. ये जो यहाँ से डॉट है वो क्या है हमारा? दिस वन इज अ सेंटर पॉइंट. After that, also find the radius of each circle and measure it. Now radius find करने के लिए हमारा सर्कल का जो हाफ मेजरमेंट होगा, ठीक है, सर्कल का जो हाफ मेजरमेंट है वो क्या होगा? होगा रेडियस. सो हियर 6 सेंटीमीटर. ठीक है, हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर? 6 सेंटीमीटर. सो 6 सेंटीमीटर का हम हाफ करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आर देयर. सो यहाँ से ड्रॉ वन लाइन. हम एक लाइन बना लेंगे. ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ वन लाइन. गिव द नेम C और यहाँ पे हम नेम दे देंगे O. So this one is how many centimeter are here? 3 centimeter. How many centimeters are here? 3 centimeter. So here we have to write R is equal to 3 centimeter. Radius is equal to 3 centimeter. After that, again we have to draw one circle. Now here this one we have to find the center point. This one is the center point O.
नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ये सर्कल है वो कितने सेंटीमीटर का है, ठीक है. सो इन दैट दिस सर्कल इज 7.5 centimeter. How many centimeter are there? 7.5 centimeter. So उसका हम हाफ करेंगे. So here we get the answer. .5 centimeter. Now look at this. 3.5 centimeter. Now join the dot. Write A here. OA. Write it here. यहाँ पे लिख लो 3.5 centimeter. And here we have to write OA is equal to 3.5 centimeter. 3.5 centimeter. Write it here 3. Now look at both the circle and write it down in your notebook. Look at this. Now next circle we have to draw. Okay, so in that circle is ready. Now first of all, how many centimeter are there? First of all we have to find the center point. So here this one is a center point. यहाँ पे हम O नेम दे देंगे इसको O. Now find the how many centimeter are there? 10 centimeter. How many centimeter are there? 10 centimeter. हाफ हमें उसको करना है, ठीक है, तभी हमें रेडियस मिलेगा. So here 5 centimeter are there. Write it here C. Now see. OC radius is equal to 5 centimeter. So here we have to write 5 centimeter. यहाँ पे हम लिखेंगे R is equal to 5 centimeter. R is equal to 5 centimeter. Now next one. Again we have to draw one circle and after that find it out. Center point and radius also. Now see. This one is the center point. Here we have to give the name O. After that we have to find total length of the circle. Total length of the circle is 4 centimeter. 4 centimeter का हम half करेंगे. So we will find the radius 2 centimeter. How many centimeter are there? 2 centimeter. Join the dot. Write the name here E. And here answer is 2 centimeter.
So here we have to write R is equal to 2 centimeter. Now look at both the circle and draw it. Again we have to draw one circle. Circle is completed. Now we have to find center point. So this one is a center point. We have to give name here O. And now we find it out total length of the circle. Total length of the circle is 8.5. 8.5 उसका हम अभी हाफ करेंगे सो हमें रेडियस मिल जाएगा. ठीक है. सो इन दैट now see 4 after 5 6 7 4.7 half is a 4.7. here हम C नेम दे देंगे और here radius is equal to 4.7 centimeter. So here we have to write R is equal to 4.7 centimeter. 4.7 centimeter. Now next one, again we have to draw one circle here. After that we have to find it out center point. Center point is O. Total length of the circle. Total length of the circle is 11.5. Total length of the circle is 11.5. अभी 11.5 का हम हाफ करेंगे so we will get the answer here. Now see, answer is 7 8 5.8. 5.8. So here we have to write F. Radius is equal to 5.8 सेंटीमीटर. यहाँ पे हम लिखेंगे OF is equal to 5.8 centimeter. Now look at first circle and write it down in your notebook.
Now look at next one. Okay students, so our next question is find the center of all the circle given below. Mark the center and the diameter in each of the circle. So in that, for example, here we are having one circle. In that circle, mark the center point. So this one is the center point O. Center point O. Now we have to find center point in diameter in each of the circle. We have to find diameter. Total length of the circle, that is a diameter. So here total length of the circle is a 7 centimeter. Total length of the circle is a 7 centimeter. Make one line. Write it here. 7 centimeter diameter. Also we have to find radius. Radius is a half of the circle. That one is a 3.5 centimeter. 3.5 centimeter radius. So here AB, we have to write the answer. OA, OB is equal to 3.5 centimeter. OB is a R. OB is a R. 3.5 centimeter. And AB, AB is the diameter. AB is equal to 7 centimeter. AB is equal to 7 centimeter. Now look at this circle. After that, next one, we have to draw one circle again. So we know how we have to write it. Now next one, center point O. Total length of the circle, that means diameter. So 4 centimeter. How many centimeters are there? 4 centimeter. Join it. EF 4 centimeter. Here we have to write diameter 4 centimeter. Half of the circle, that one is a radius. So half of the circle is 2 centimeter. Half of the circle is
2 centimeter. So here we have to write 2 centimeter. So our answer is OF. OF is equal to 2 centimeter radius, 2 centimeter radius, and EF in a bracket diameter D is equal to 4 centimeter, is equal to 4 centimeter. Now look at both the circle and draw it. First of all, we have to find it out. Center point O. Total length of the circle, that means diameter. Total length of the circle is 5.4 centimeter. 5.4 centimeter. So here, join the dot. Write it here CD 4 total length of the circle is 5.4 centimeter. 5.4 centimeter. 5.4 centimeter is a diameter. Half of the circle is a radius. Half of the circle is 2.6 centimeter. .7 centimeter. So here we have to write 2.7 centimeter radius. Here write it OD in a bracket radius is equal to 2.7 centimeter. CD in a bracket diameter is equal to 5.4 centimeter. Now we have to draw next one circle. Okay, first of all we have to find it out. Center point O. Total length of the circle is 10 centimeter. Drawing the line. Write the name PQ. 10 centimeter. Diameter. Half of the circle
half of the circle is a 5 centimeter. 5 centimeter. So here we have to write 5 centimeter is equal to radius. So OQ in a bracket R, OQ in a bracket R is equal to 5 centimeter, and PQ in the bracket D, diameter, is equal to 10 centimeter. Now look at both and write it down in your notebook. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सीखा कि इन अ सर्कल में हमें हाउ टू फाइंड द सेंटर पॉइंट, हाउ टू गिव द नेमिंग कैसे देने, सेंटर पॉइंट कैसे फाइंड करना है, ठीक है, एंड हाउ टू फाइंड द रेडियस सर्कल. इफ वी आर हैविंग द सर्कल हमारे पास है, ठीक है, तो उसमें से हम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड द रेडियस वो भी हम लोगों ने सीखा, एंड हाउ टू फाइंड द डायमीटर्स, उसकी नेमिंग भी हम लोगों ने, हाउ टू गिव द नेमिंग कैसे देने वो भी हमें सीखा है, ठीक है. सो इन दैट मार्क द सेंटर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल, ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द ईच सर्कल एंड मेजर इट. तो उसमें हमें आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हाउ टू फाइंड द सेंटर पॉइंट. सेंटर पॉइंट जो होगा उसको हम ओ नेम देंगे, ठीक है. आफ्टर दैट उसका जो मेजरमेंट आएगा हाफ ऑफ द सर्कल जो हमें मिलेगा वो हमारा रेडियस होगा, ठीक है. सो वहां पे जो लास्ट पॉइंट होगा वहां पे हम क्या करेंगे, उसको कोई भी नेम A, B, C आप अपने हिसाब से दे सकते हो. आफ्टर दैट उसका हम मेजरमेंट लेंगे तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल फुल सर्कल जो है उसका सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है. सो हाफ ऑफ द सर्कल जो होगा वो क्या होगा, 3 सेंटीमीटर. सो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, आंसर्स लिख सकते हैं. आफ्टर दैट डायमीटर से वो 7 सेंटीमीटर है, सो हाफ उसका करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3.5. सो यू हैव टू राइट लाइक दैट. आफ्टर दैट हम लोगों ने आज जो किया है, ठीक है, इन अ होमवर्क में आप लोगों को हमने जो आज किया वही एज अ होमवर्क आप लोगों को कंप्लीट करना है, और होमवर्क जो है वो बिफोर 3 o'clock आप हमें सबमिट करोगे. ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय.